Good morning, all of you, and happy Navami to all of you. I hope I am audible and visible clearly. All right. So today is 1st of October, and we'll discuss national international news. Okay, so let's start. FPI, Foreign Portfolio Investment. Good morning, Vijay Lakshmi. Foreign Portfolio Investment. Road accident in 2023. Farmer suicide. Good morning, Rajendra. Crime against children. Monsoon rainfall. I hope audio is fine. Yes. Monsoon rainfall. Women in the labor force and girls' education. And one news from Odisha as well discuss. Foreign portfolio investment. Foreign portfolio investor withdrew 23,885 crore from Indian equities in September 2025. In September 2025, 23,885 crore have been withdrawn from the foreign portfolio investor, marking the third consecutive month of the net outflow. What is this net outflow? Net outflow in the sense the money which is coming into the India and the money which is going out from the India. That is the money outflow. Okay, net outflow. And this is the third consecutive month where we have seen the net outflow. With respect to what? With respect to foreign portfolio investment. What is this foreign portfolio investment? The investment which is coming in the share market from the foreign countries. There is a difference between the foreign direct investment and foreign indirect investment. So this portfolio investment is the indirect investment. Why this is indirect investment? Because this investment is on the stock market, financial assets. Direct investment is on the physical asset, building, land, factories, industries, etc. This comes despite a strong start to 2025 when APIs pumped in over 78,000 crore in January. Okay, this comes despite a strong start to 2025 when APIs pumped in over 78,000 crore in January. So आम जमी कहे कि विड्रो देखा मिलूँ जदिव 2025 रे गोटे स्ट्रंग इनफ्लो एफपीआई आमको आसी आप देखिए लास्ट ईयर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर टाइम रे मार्केट काफी डाउन जाऊला कहला दिस जो स्टॉक मार्केट डाउन जावा पछरे रीजन थला कौन ना इन्वेस्टर्स आर विड्रोइंग मनी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी एंड तापरे जनवरी फेब्रुआरी ऑनवर्ड्स वी हैव सीन ए बाउंस बैक ऑफ द मार्केट एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज भी होता सडनली आम ए लास्ट 15-20 डेज रे आम देखीचु इनफैक्ट द सेप्टेम्बर मंथ एगेन द मार्केट हैज फॉलन डाउन तो या पछरे बेसिक रीजन हूँ जो फॉरेन इन्वेस्टर माने अच्छे दे आर सिंपली विड्रोइंग मनी रीजन्स कौन आउटफ्लो हाई वैल्यूएशन एंड वीक अर्निंग इंडियन इक्विटीज आप देखिए और बेसिकली जो कंपनीज गुड़िक से निजर कंपनी वैल्यूएशन काफ़ी दौरान जो कि इन्वेस्टर को हायर प्राइस रे से माने शेयर परचेज करूँ इन्वेस्टमेंट करूँ बट यदि आप अर्निंग देखिए कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू पैरामीटर्स देखिए सेठी काफ़ी पुअरली परफॉर्म करूँ जो कि जी बेनिफिट्स मिलवा कथा जो मैंने स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर मैंने अच्छा जो डिविडेंड जी मिलवा कथा दे आर नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड मल्टीपल क्वार्टर्स ऑफ dull corporate performance reduced attractiveness of the foreign investor multiple quarter बहुत गुड़े क्वार्टर जो 3टा मासिकिया जो क्वार्टर आम कहे आम डल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से देखु ना जदि से बेटर होता बोध हुए एत मात्रा ले ऑफ हो न था आई थिंक रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज दैट एक्सेंचर कंपनी इज ऑल्सो लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज ओके गूगल इन फैक्ट द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज तेणु ये प्रॉब्लम देखा मिलूँ ड्यू टू द डल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस
एंड दैट इज द रीजन जो कि आपण देखिए आमर ये पूरा के पूरा विड्रॉल चली रुपी डिप्रिशिएशन ये जो रुपी कन्स्टांटली डिप्रिशिएट करुँच जो मैंने डॉलर रे आसिकी आपणकर इन्वेस्ट करि थांते सेमान को लगुच कि डॉलर रिटर्न स्मॉलर वीक रुपी मेक्स डॉलर रिटर्न स्मॉलर से माने प्रथम कौन करेंगे कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी को तापर इन्वेस्ट करेंगे जदि वो कन्वर्जन रे तांको अधिका रुपी मिलूची बट पुणी जितेबाला तांको कन्वर्ट करके डॉलर रे आनिबा को पड़िबो विड्रॉ कला बेलू से अधिका रुपी दबाक पड़ो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर तेणु सी भी गोटे डिस्करेजिंग द एपीआई दिस इज वन अनदर फैक्टर ग्लोबल allocation shift emerging market fund managers have reduced India's allocation to 16.7% lowest since November 2023 okay emerging market fund manager reduced India's allocation in terms of what India's allocation in terms of जो आपनकर portfolios गुड़िक अच्छी म्यूचुअल फंड अच्छी चाइनार शेयर इंक्रीज होउची with respect to that and then the policy and tariff uncertainties कारण policy uncertainties गोटे बड़ फैक्टर consistently US is imposing some or other way tariff आपनकर देखिए 100% US tariff फार्मास्यूटिकल ऊपर कंपनीज ऊपर 100% US tariff पकईदेला H1 वीसा को फी हाइक करदेला tariff structure रे प्रतिदिन किसी ना किसी न्यूज आसूची सो दिस लीड्स टू अनसर्टेनिटीज इन द इंडियन मार्केट जो कि इन्वेस्टमेंट कमी कमी चलती जदि इनफैक्ट आप देखिए प्रथम तो निफ्टी 50 जमती और सिंपली आपपर जो स्टॉक मार्केट अच्छी सी आपणकर कमी कमी चली देखिए सेप्टेम्बर 2025 इट वाज अराउंड 25,810 सेप्टेम्बर 2025 रे ये 24,611 ये आपणकर रिडक्शन आपको देखा मिले सेकेंड हूँ रेजेस कंसर्न द मीडियम टर्म ग्रोथ नैरेटिव एंड मार्केट इनस्टेबिलिटी कारण जदि इन्वेस्टमेंट आसब ना डेफिनेटली जो ग्रोथ आम प्रोजेक्ट करूँ से भी आमको मिल ना एंड देन फर्स्ट इंस्टेंस इन अप्रैल 2018 ऑफ आउटफ्लोज बाय द लॉन्ग टर्म हाई कन्विक्शन इन्वेस्टर्स अप्रैल 2018 पर आप देखिए आमर एभली बड़ या सिग्निफिकेंट अमाउंट रे इन्वेस्टर माने विड्रॉ कर इन्वेस्टमेंट जोटा आमको एबे देखा मिलूँ आउ गोटे सबुठ बड़ इम्पैक्ट मु कहि बिफोर आई मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ये जो डेप्रिशिएशन होची वीक करेन्सी आप देखिए डेप्रिशिएशन होची बोली से माने विड्रॉ करूछंदी एवं आउ गोटे एक्सप्लेनेशन भी लेट मी टेल यू विड्रॉ करूछंदी बोली डेप्रिशिएशन भी होची या पछरे लॉजिक कोन अछि इंडियन रुपी वीक कहीं होची ना डिमांड फॉर डॉलर इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट जार डॉलर आपणकर बढ़ो कारण से चाहूँगी रुपी देकी डॉलर रे कन्वर्ट करके विड्रॉ करके नापी सो डिमांड फॉर डॉलर इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट जो डॉलर डिमांड बढ़ो से आप देखिए प्राइस ऑफ डॉलर विल इंक्रीज अगेंस्ट द रुपी सो रुपी इज डेप्रिशिएटिंग एंड डॉलर इज अप्रिशिएटिंग ये भी गोटे फैक्टर जो आमको ये जो डेप्रिशिएशन या वीक रुपी आमको देखा मिलूँ क्लियर अच्छे नेक्स्ट रोड एक्सीडेंट्स इन 2023 over 1.73 lakh killed in road accidents in 2023 1.6% rise as per the NCRB okay what is this NCRB जो आपनकर क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो अछि देखिबा more than 1.73 lakh people were killed and 4.47 lakh injured in the road accident as per the 2023 according to the NCRB report National Crime Records Bureau. The data underlines persistent road safety challenges and especially for the two-wheeler riders. The road safety challenges persistently आमको देखा मिलूँ स्पेशली फॉर द two-wheeler riders. Two-wheeler डेथ जदि आप देखिए हाईएस्ट अच्छी आपंकर तमिलनाडु रे एंड देन द उत्तर प्रदेश रे तमिलनाडु इज 11,490 उत्तर प्रदेश इज 8,370 एसयूवी कार जीप डेथ्स आप देखिए 19.2% अच्छी ट्रक लॉरी मिनी ट्रक एक्सीडेंट ये उत्तर प्रदेश रे सबुठ हाईएस्ट दैट इज ऑलमोस्ट 30%. स्पीडिंग फैटालिटीज देखो स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग जोटा आम कहे 58.6%, डेंजरस केयरलेस ड्राइविंग ओवरटेकिंग 23.6%,
and others alcohol, weather condition, animal crossing use only 3%. Speeding plus reckless driving leads to 82% of the total death accident. रोड टाइप देखिए नेशनल हाईवेज रे इटी आप देखिए 32.6%, 34.6% ए सिग्निफिकेंट नंबर अच्छी नेशनल हाईवे रे. स्टेट हाईवेज रे 23.4. अदर रोड्स ओवरऑल आप देखिए 42%. साउंड इज लो. Is it okay now? Because is it okay now? National highways, despite constituting 2% of the road network, account for over one third of the fatalities. Okay, ଆମର ହାଇୱେଜ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି 2% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କ. ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଠି ଆମର 34.6% ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି. ପଲିସି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଦେଖିବା. ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆସିଛି. ଏନହାନ୍ସଡ ପେନାଲ୍ଟିଜ୍, ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ବୋର୍ଡସ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ସାମାରିଟାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ବି वी हैव सीन दैट इंक्रीज इन द एक्सीडेंट. कारण मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 लागू करागला, यू मस्ट हैव सीन कि गाड़ी दाम थिला 15,000 रुपीज सेकेंड हैंड रे, बट तापर फाइन पड़ी 30,000 50,000 ओनली वायोलेशन ऑफ दोज बेसिक रूल्स. नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी फोकस ऑन इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड इमरजेंसी केयर. ये भी हमें देखीचे. इंडियाज कमिटमेंट to have road accident deaths by 2030. To have road accident deaths by 2030, 2030 सुधा आमे रोड एक्सीडेंट को हाफ करिबा पई चेष्टा करिछु. गति शक्ति एंड भारतमाला इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट also raises safety concern if not matched with design and enforcement measure. जो गति शक्ति एंड भारतमाला प्रोजेक्ट्स भी अच्छी ता अंडर रे हमें नेशनल हाईवे मध्य डेवलप करने को चेष्टा करूँ, सो दैट मोर एंड मोर सच नेशनल हाईवे नेटवर्क्स कैन मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स. इशू हाइलाइटेड जेहेतु टू व्हीलर्स शेयर अधिका इन टर्म्स ऑफ द टोटल फर्टिलिटीज, देन बेसिक जिनस हूँ हेलमेट नॉन कम्प्लायंस गोटे फैक्टर आमको देखा मिलूँ. एंड अनसेफ अर्बन रोड्स आम देखीचे वर्षा दिन में मॉनसून सीजन रे कोभली भाव में लगातार भाव में आपणकर जो रोड कंडीशंस गुड़िक पुअर रोड कंडीशन आम देखीचे. टाइम बैंड इंडिकेट्स पुअर विजिबिलिटी, रश आवर वायोलेशन, वीक ट्रैफिक एनफोर्समेंट, ये भी गोटे फैक्टर. आप देखिए हेलमेट इज समथिंग वेरी कॉमन प्रॉब्लम आम देखुचे. हेलमेट न पिंधि की जो अवस्था हो दिस इज समथिंग वेरी आम हेलमेट कौन पर वेयर करूचे सो दैट we can avoid the traffic fine. Okay, there is no intention to wear helmet so that we can save our life. The perception change निहाती दरकार. The attitudinal change जोटा हमें कहूँ. National highways emerging as a high risk zones due to speeding and lack of control access. Okay, and persistent data gap between states pointing to the uneven enforcement capacity. तो ये किसी रीजन्स आप हाईलाइट करें कहीं आम एनफोर्समेंट हो या एक्सीडेंट रेट एत अधिका डिस्पाइट वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस मोटर व्हीकल एक्ट, इंडियाज कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रोड सेफ्टी एंड नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी थाई कि भी वाई द नंबर इज सो हाई. नेक्स्ट हूँ फार्मर सुइसाइड विल सी. महाराष्ट्र कर्नाटक रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुइसाइड. Fields of despair देखिवा में. The National Crime Records Bureau has reported that 10,786 farmers and agricultural workers committed suicide in 2023. Yes, Maharashtra, Karnataka accounted for over 60% of these suicides. Maharashtra and Karnataka, these are the two most developed state you can say.
and still you will find the higher number of farmer suicides. Problem is with what? Deep seated agrarian distress. Deep seated agrarian distress. Okay. So देखो total suicide 1,71,418. Total farmer and agricultural worker suicide 6.3%, that is 10,786. Farmers and cultivator, that is 4,690. Agricultural worker, that is 6,096. Male individual যদি ଆପଣ ଦେଖିବେ 90% male individual. Maharashtra one of the highest, that is 38%, in fact highest, not one of the highest, rather it is the highest number. Karnataka 22, Andhra 8.6, Madhya Pradesh 7.2, and Tamil Nadu 5.9%, and these are the so-called developed state. अन्य स्टेट रे आपण जदि देखिए वेस्ट बेंगल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप रिपोर्टेड जीरो फार्म सेक्टर सुइसाइड्स. कुड बी ए पॉसिबिलिटी, सेमती नुह कि दुटा ये स्टेट्स गुड़ी को काफ़ी डेवलप्ड एंड किसी प्रॉब्लम नहीं. कुड बी ए पॉसिबिलिटी रिपोर्टिंग है नथिबो. देयर वाज नो सच रिपोर्टिंग फ्रॉम दी स्टेट्स. दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी. Maharashtra's Marathwada and Vidarbha region, notorious for recording farmer suicide, remains epicenter. Marathwada and Vidarbha region, ये हूँ ड्रॉट प्रोन एरिया. मराठावाड़ा एंड विदर्भ रीजन, जदि आप मराठावाड़ा विदर्भ रीजन को देखिए, दैट इज इन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट. एटा हूँ मेन फैक्टर. लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट जो मॉनसून रो वर्षा सेठी हुए नहीं. वी हैव सीन विंडवर्ड साइड वेयर द एरिया गेट्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड डेफिशिएंट रेनफॉल कोटी देखा मिले मराठावाड़ा एंड विदर्भ, विच इज नोन एज द लीवर्ड साइड, ऑपोजिट ऑफ द विंडवर्ड साइड. सो नोटोरियस फॉर रिकॉर्डिंग फार्म सुइसाइड, एपिसेंटर, एंड बेसिकली द कॉटन एंड द सोयाबीन बेल्ट. कॉन्टेक्स्ट एंड कॉजेस देखो. स्ट्रक्चरल agrarian crisis, indebtedness, जमती आम देखीचे because that is the point I am saying, it's not zero suicide, even if as per the NCRB data these are zero suicide cases, but it depends on the reporting. Okay, it depends on the reporting. कारण जति कि actually एठी एंट्री डेटा एंट्री की करिवो सरकार ही करेंगे. दैट मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट, लोकल एरिया रे जो पुलिस स्टेशन थी, एफआईआर थी, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ताको किसी अन्य रीजन दिया जाई पारुथो, बट नॉट द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस. ओके, से रिकॉर्ड रे आसेनी. दैट्स इट. स्ट्रक्चरल एग्रारियन क्राइसिस, इंडेप्टेडनेस, जो मनी लेंडर्स मानकोठु से माने बोरो करूछंदी एंड दे कैन नॉट और दे आर नॉट एबल टू रीपे इट बैक. क्रॉप फेल्यूर गोटे प्रॉब्लम देखा मिलूँ. क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स अनटाइमली रेनफॉल एंड डैमेज ऑफ दोज क्रॉप्स. मार्केट वॉलेटिलिटी, लो प्राइस रियलाइजेशन, दीज आर कंटिन्यूइंग टू ड्राइव फार्मर डिस्ट्रेस. Maharashtra, Karnataka are drought prone with heavy dependence on monsoon, making farmers vulnerable to crop loss and debt trap. तेणु जेहेतु हेवी डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून एंड दीज आर द ड्रॉट प्रोन एरिया, से आप देखिए से कॉटन कल्टिवेशन हो, सोयाबीन कल्टिवेशन हो. द रीजन हूँ दीज आर द रेन सैडो जोन्स एंड ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर आम से जो ड्राई लैंड फार्मिंग गुड़िक करोचे. एंड स्टिल जदि किसी क्रॉप लॉस हो और एनीथिंग हैपेंस, देन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग इज द एविडेंस फ्रॉम दैट रीजन. क्रॉप लॉस एंड डेब्ट ट्रैप. पॉलिसी इशू देखिए, फार्मर ग्रुप्स ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशली waiver of 11% import duty in cotton, which could flood Indian markets with cheaper American cotton. Free trade agreements and tariff terrorism cited as the threats to domestic producer. तेणु एक तो import duty on cotton आमे हटाई देले. तेणु लोकल फार्मर जो कॉटन प्रोड्यूस करूचंदी आमे अमेरिका रो चीपर अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट करूचे. सो दिस इज समथिंग डैमेजिंग द domestic production or domestic product in fact. Second, free trade agreements and tariff terrorism cited as threats to the domestic producer. आम एक्सपोर्ट ही करी पारुना.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगले कौन टैरिफ रही से चीपर प्रोडक्ट आम देश आसिक बिक्री हम एंड टैरिफ टेररिज्म दैट मीन्स हायर अमाउंट ऑफ टैरिफ इन द फॉरेन कंट्रीज which discourages the export as well. Concern that such policies would undercut domestic prices, worsening farmers' income. तेणु cheaper price रे ही बिकिबाकू पड़िबा and worsening the farmers' income, already distress in the cotton growing region. Way forward कौन ही पारे? Enhancing the farm income, realistic MSPs, assured procurement and value chain integration. Realistic MSPs in the sense जो MSP सरकार केवल अनाउंस करबा पई करूचंदी. No private procurement agency is giving MSPs to the farmers. ये गोटे प्रॉब्लम हमको देखा मिलूँ. तेणु रियलिस्टिक MSP जदि करवा जी से पे करें एंड अस्योर्ड प्रोक्योरमेंट सो दैट गवर्नमेंट विल अस्योर दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रोक्योर्ड और इन परचेज्ड फ्रॉम द फार्मर सो दैट फार्मर्स वुड गेट द इनकम. ओके एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन इन द सेंस सपोज एमती सप्लाई चेन जोटा आम कहे स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन बेटर प्रोक्योरमेंट बेटर प्राइसिंग ये सब जिन को आम वैल्यू चेन इंटीग्रेशन बोली कहे. डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्रमोट लेस वाटर इंटेंसिव एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स. लेस वाटर इंटेंसिव इन द सेंस जमती आप सिंपली कहींपर जमती मिलेट्स ड्राईलैंड फार्मिंग आम कहे मिलेट्स हाई वैल्यू क्रॉप्स. ओके इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवा एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज भी दवा. फॉर एग्जांपल माइनर इरिगेशन क्लाइमेट एडवाइजरीज भी जारी करवा सो दैट फार्मर विल बी केयरफुल अबाउट दैट. क्रेडिट एंड इंश्योरेंस रिफॉर्म improve access to the formal credit. Still at the ground level you will see the barriers in the access to formal credit. Make प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना payouts timely and transparent. जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दैट इज द इंश्योरेंस स्कीम अच्छे ताको टाइमली एग्जीक्यूट करिबा एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एग्जीक्यूट करिबा होची चैलेंज. मार्केट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ टैरिफ्स टू प्रिवेंट प्राइस क्रैशेस फार्मर सेंट्रिक FTAs that is free trade agreements. Institutional support strengthening extension services mental health support farmers collective एवं आमे जो पढ़ी से प्रोड्यूसर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन that must be strengthened so that they can extend the support to the farmers. Okay, data driven intervention, granular district level suicide monitoring and targeted support packages. So if we are along with the farmers at every moment तेबे गोटे टाइप रो सॉल्यूशन आपण निश्चित भाव में देखि पारिबे. ओके जेमती फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहूची local administration along with the farmers because every step you will realize कि बर्तमान हार्वेस्टिंग सीजन आसला क्रॉप लॉस है फार्मर्स मैंने डेप्टर पड़ेला सो दैट यू कैन गिव दैट कॉन्फिडेंस कि डोंट वरी एंड विल डेफिनेटली अपन को प्रोवाइड करा जिवो. ओके सो ये जो टाइप कॉन्फिडेंस यदि इफ दे विल गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट डेफिनेटली सच सिचुएशन और सच सिनारियो can be minimized. Okay, next देखिए क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन NCRB रिपोर्ट जेहेतु आसी तो डिफरेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन ये सब विषय डेटा में देखुचे. क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन देखिए द NCRB has released its annual crime data for 2023 revealing a 9.2% increase in the crimes against the children compared to the 2022 2022 कंपेरिजन रे 9.2% इंक्रीज इन द क्राइम रेट अगेंस्ट द चिल्ड्रेन. यदि इंडिकेटर आपण देखिए टोटल केसेस हैज इंक्रीज्ड 1.77335 एंड दिस इज 1.162449. ओके क्राइम रेट देखिए 36.36 थिला ये 39.9. कैटेगरी देखो किडनैपिंग एंड अबडक्शन दिस इज 45%. POCSO Act that is the sexual harassment sexual offences 32.2%. किडनैपिंग जो अपन अबडक्शन होची से जिनसे हमें ओडिशा रे भी देखी देयर आर मल्टीपल सच केसेस वी कैन सी. हाईएस्ट नंबर ऑफ दैट इज द मध्य प्रदेश 22,393. महाराष्ट्र अगेन अनदर डेवलप्ड स्टेट 22,390. उत्तर प्रदेश दैट इज 18,852. ओके. So basically the girl child for this
डोमेस्टिक हेल्प हिसाब रे हेल्पर हिसाब रे यूज करा जाउची सेमानकु फ्लेस स्लेवरी भी फ्लेस ट्रेडिंग भी करा जाउची सेमानकु नहीं कि ये सब जिनस अच्छी प्रॉब्लम राइजिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स बोथ इंक्रीज रिपोर्टिंग and persistent gaps in child protection mechanism. This has exposed the mechanism which can protect the children from such kind of activities. So this is one part. Second part, kidnapping and abductions देखिए trafficking, forced marriages, illegal adoption and ransom ये भी factor. POCSO cases reflect growing concern about the sexual offences and including online exploitation. Madhya Pradesh has consistently topped the list for POCSO and kidnapping cases in recent years, indicating systematic issues in both child protection and law enforcement. Okay, so Madhya Pradesh रे POCSO related cases अधिका देखिବାକୁ मिलुची prevention of child sexual offence. तेणु child sexual offence गुड़िक अधिका एमपी that means is again exposes the loopholes with respect to the MP's strategy or this policy. Way forward, strengthening institutional mechanism, full operationalization of child welfare committees and POCSO special courts for the fast track solve of these cases, better coordination and sensitization to the police, judiciary and the child protection units. ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ डेवलपमेंट अथॉरिटी अच्छी जोटिकी चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर भी था सेठी सो इट्स देयर ड्यूटी एज वेल टू लुक इनटू दिस मैटर्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन ट्रेन पुलिस प्रोसिक्यूटर्स मेडिकल पर्सनल एंड चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स mandatory reporting and rapid response system. So these are other such parameters which we can do. Community awareness and prevention, public campaigns to raise awareness about the POCSO kidnapping risk, school-based programs so that personal safety education, जमती हमें आगु देखुले कौन ना स्ट्रेंजर्स मानक किसी भी नब ना चॉकलेट नब ना स्ट्रेंजर्स मानक सहित कथा हम ना दीज आर द समथिंग लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम आवर स्कूल डेज से जिनस गुड़ी को वी नीड टू हैव very strongly enforcing in the society so that we can prevent such kind of incidents. Tech-enabled policing, use of AI and cyber tools to monitor online child exploitation and trafficking networks. For example, bullying is a common phenomenon in this social media era. Bullying, suppose आपण देखिए छोटो पिला मानक 3 years 4 years 5 years रू Instagram ID, Instagram account खोला जाऊँगी by the parents itself. Because parents also want to like से पिलार जो videos post करिबा ये सब करिबा होची. And suddenly all of a sudden अपन देखिए once she or he starts using cell phone से भी Insta use करूँगी. So this is something very kind of what now and among the school children you might have seen this comparison in the sense इंस्टारे कहार के फॉलोअर अच्छा कहार पोस्ट के लाइक आसूँ फेसबुक रे भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एंड दे ऑल्सो इनवॉल्व इन द गेमिंग एज वेल तेणु से जगह आप साइबर बुलिंग भी गोटे फैक्टर देखा मिलूँ सो स्ट्रेंथनिंग साइबर सेल्स इज अनदर केस फास्ट ट्रैक जस्टिस रिड्यूस पेंडेंसी इन पोक्सो केसेस एंश्योर विटनेस प्रोटेक्शन एंड काउंसलिंग सपोर्ट नेक्स्ट इज द मॉनसून रेनफॉल इंडिया गॉट 8% more monsoon rainfall this year, says IMD. IMD announced that India received the 8% more rainfall than normal during 2025, the southwest monsoon season, making it the highest since 2001 and 38th highest since 1901. Overall rainfall देखो 8% above normal, 93.7 centimeter. Monsoon period is June 1 to September 30. Ranking 5th highest since 2001, 38 since 1901. Number of depression 7, 1 deep depression onset of Kerala. These are the few facts. Now northwest India जदि आपण देखिबे deviation from the normal highest since 2001 plus 27%, and this we have seen in case of the Punjab. जोथि पाएंगे
फ्लड पंजाब रे देखा मिलता ओके पंजाब रे जो फ्लड देखा मिलूँ ओनली फॉर दिस 27% हाईएस्ट और मोर रेनफॉल सेंट्रल इंडिया इट्स द 15% साउथ पेनिनसुला 10% ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट्स 80% ऑफ द नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल फीचर इफ यू सी अर्ली ऑनसेट ऑफ द मॉनसून ये गोटे फैक्टर थिला 7 मॉनसून डिप्रेशन दैट मीन्स आप देखिए आमर गोटे ईस्टर्ली विंड अच्छी ईस्टर्ली विंड फल आपणकर जो मॉनसून टाइम रे डिप्रेशन गुड़िक बे ऑफ बेंगल रे हुए अंडमान सी रे हुए दैट विल कम टू द peninsular area of India and that accelerates the monsoon as well and this makes intense rainfall during the monsoon. September rainfall was plus 15% higher than June and July August that is plus 5% each. Agriculture and environmental implication positive for agriculture. Kharif crops rabi जदियो आपनकर December January February habo but still it's good for rabi also. Negative flooding and landslides we have seen in the North India. Infrastructure damage and loss of life. Deficient rainfall in the east and northeastern may hurt crops like paddy affect groundwater recharge. So east and northeast रे टिके deficient देखिबा को मिलुची other than this northwest and other parts of the country. Women in labor force. More women join the labor force but are they really employed? As you know आपण देखिबे GDP रे आमे women मानकर जो हाउसहोल्ड वर्क अछि आमे ताको कैलकुलेट करू ना आई थिंक यू नो दिस ओके की डेटा देखंदु फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 11-12 रे थिला 31.2% 17-18 रे थिला 23.3% 23-24 रे थिला 41.7%. These are the increasing the women participation in the labor force. Rural women as the driver, this increase in mainly from the rural women, not the urban. If you see the sectoral composition, agriculture that is 71.1%, 18-19 रे थिला सेटा increase हेजी 76.9. कहीं ये जिनस मु आगु भी आपन को कही since male counterparts they have left the home, they have gone to the urban area for the better livelihood opportunities. So whatever agricultural work is there, that is the responsibility of the women. So women participation in the agricultural sector has significantly increased in this recent past. Secondary and tertiary sector if you see this has been declined. या reason होची exactly से कारण tertiary और secondary रे male मानकर participation बढ़ी and agriculture women female मानकर basically in the rural India. Type of work जदि आपण देखिबे domestic duties ये आपणकर 15+ rural women को केस रे domestic duties reduce हेची. Helpers in the household enterprise बढ़ी that is the unpaid. Own account workers and employers that has been increased 4.5% to 14.6% and basically in the agriculture, dairy, poultry, goatry is गुड़िक अच्छी. Okay, early earning trends देखो real earnings fell for the self-employed and regular salaried women, increased only slightly for the casual workers. तमन ये जो मुझे कहली ओनरशिप अच्छी काली भी आम ये जिन डिस्कस करूँ लैंडर ओनरशिप हाउसहोल्डर ओनरशिप अच्छी मेल मेंबर पाखे तो जो से हाउसहोल्डर जो इनकमटा होना आम काउंट कौन करुचे मेल मेंबर केस रे ही करुचे. वी आर नॉट अकाउंटेड दिस इनकम अर्न बाय द वुमेन आर नॉट काउंटेड बिकॉज ऑफ दिस properties households are owned by the person male member. Positive aspect, rising female labor force participation suggests more women entering economic activities. Reduction in unpaid domestic work would reflect increased economic engagement. यदि unpaid domestic work in घर रे जो household काम आमे करूचे यदि सेठी कमेला definitely they will give more time to the outside work. Outside in the sense जो आपनकर एग्रीकल्चर हो पोल्ट्री हो डेयरी सेक्टर हो से जगह. Women in labor force concern and structural issues. Agricultural dominance, most of the increase in the agriculture, often low productivity and unpaid work. Unpaid helper roles, a large share of the increase comes from unpaid family work.
raising questions on how employment is defined. Okay, unpaid family work, that means family जो आपणकर हाउस होल्ड वर्क जोटा कि पेमेंट आमको मिलूना. Falling real income, more participation has not translated into better income, indicating distress driven participation, not empowerment. Exactly see जिनस ये आर्टिकल रो मेन जिनस होउची जदि वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ी किंतु फाइनली इनकम रे रिफ्लेक्ट हो नाही. सेइथिपाई आमे कहूचे कि वुमेन मानक आमे फ्रीली काम करूचे. कहीं होनी ये जिनस मु कहली द रीजन होउची women are not owner of the household, they are not owner of the land, not the agricultural land. तेणु इनकम जहाँ आसूँ से मेल ना रे जाऊँगी. ओके, stagnant wage employment, there has been no significant expansion in secure remunerative and regular jobs, and basically जो workforce आमर बढ़ुची female labor force participation से गुड़ी को unorganized sector रे बढ़ुची. And if you go to the rural area, you will find women labor participation has increased in the MG and RG work also, Narega related work also, जो manual and unorganized sector work अच्छी. Next is the girls education. देखिए गर्ल्स एजुकेशन हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी ये हमारा माइंडसेट थिला आगरू. ए प्रिवेलेंट सोशल माइंडसेट इन इंडिया वाज एनकैप्सुलेटेड इन द फ्रेज बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी. द हाईलाइटेड डीप रूटेड जेंडर बायस और गर्ल्स एजुकेशन वाज अंडरवैल्यूड सोशली एंड इकोनॉमिकली. सो आम झील मान पचर पैसा खर्च करूनथिले विथ रेस्पेक्ट टू स्टडी. The anecdote from Dwarka, Gujarat reflects how earlier policy enforcement under the Gaikwad dynasty led to high female literacy, while later generations saw stagnation without accountability. से आर्टिकल रे गोटे anecdote दिया जाइछि कि द्वारका जो गुजरात रे थिला से जगह रे गायकवाड डायनेस्टी रे फीमेल मानन को काफी एजुकेशन दिया जाउतला, हायर लिटरेसी रेट थिला. ग्रेजुअली से धीरे धीरे कमी कमी चलला. गुजरात मॉडल गोटे केस स्टडी देखंतु की इनिशिएटिव Kanya Kelavani campaign, promote awareness and remove infrastructural barriers, lack of girls toilet, school of ghar distance, so that is the reason we are giving them bicycles as well, and toilet facilities jati nathibo definitely samane the girls mane they are not going to school because of this hygiene condition ko nahi. So approach hochi multi-pronged, legal, infrastructural and attitudinal as well. Female literacy in Gujarat rose to 70% above the national average is 64%. Dropout rate among the girls reduced by 90% in targeted district. Mr. Modi mobilized public support by auctioning personal gifts and contributing 21 lakh, transforming policy in a public movement. So ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर थे सही समय कथा कहु. स्किलिंग अप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. It was launched in 2015, 100 gender critical district initially and then the nationwide expansion. Ministerial support कहा रहा Women and Child Development, Health, Family Welfare and HR, Minister of Human Resource Development. Prevent female foeticide, promotes girls education. Outcome कौन था देखो. Sex ratio at birth improved from 1919 to 1929. 20 to 30 states above the national average 1930. Awareness मध्ये बढ़ेला. MP 89.5% people were aware about the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and 63.2% said encourage schooling for girls. Positive shift in delaying early marriage and higher education support. तो बर्तमान जो डिले मैरिज भी गोटे फैक्टर आपको देखा मिलूँ. ये जो फर्टिलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड हमको देखा मिलूँ. तापर रीजन हूँ गर्ल्स आर मोर करियर ओरिएंटेड and they are delaying their marriage जो कि बर्तमान ये जो लो फर्टिलिटी रेट हमको देखा मिलूँ. and in future we can expect the population control as well. Socio-economic ripple effects for girls education. Educated girls, educated women transform society through multiple channels. The demography आपण देखिए, later marriages, lower fertility. India's total fertility dropped to 2.0 below replacement. Health institutional delivery increase, infant mortality down, economy rise in women in healthcare, education, STEM that is science, technology, engineering, mathematics, entrepreneurship, एठी मध्ये economic activities बढ़ी कार women मानकर. Intergenerational children of educated mothers
a better health and learning outcome. Communities increasingly value delaying marriages and promoting higher education. In fact, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ सी जगार जो अर्ली मैरिज कर दि जाऊला आम से दंगल मूवी रे देखीचे. नाउ अवेयरनेस इज देयर, दे आर हेल्पिंग देयर गर्ल चिल्ड्रेन to get involved in the sports or whatever they want to do, and allowing them to study as well, and avoiding this early marriages because things ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ आज भी एमती केस देखा जाऊँगी. ओबियसली चेंजेस जो हैनी मेजॉरिटी केस रे हैनी, चेंजेस जो हैची दैट इज द माइनॉरिटी, बट स्टिल द माइनॉरिटी नंबर हैज इंक्रीज्ड एज पर द ट्रेंड. तो नेक्स्ट 50 years भितर बहुत हुए आम कथबार्ता करूथुबा एट दैट लेवल. वी हैव दिस जेंडर पैरिटी व्हिच इज 90% इन आवर सोसाइटी. ओके, तेणु चेंजेस होची बट नॉट इन दैट फास्टर मैनर. सो इट टेक्स टाइम कारण वी आर जस्ट ए 75 years old. ओके, कारण आपण मैंने जदि पढ़ी थे एनसीईआरटीज आपन को आइडिया ही थी. इंडिया इज द ओनली कंट्री माने इन द सेंस कि यदि आप डेवलप्ड स्टेट्स डेवलप्ड कंट्रीज मान सहित कंपेयर करेंगे, इंडिया इज दैट कंट्री जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव गिवन द वोटिंग राइट्स और फ्रांचाइज टू द वुमेन. वुमेन मान को इमिडिएटली वोटिंग राइट्स दे दी. But if you compare with America, the United States of America, the superpower in our era, they allowed, I think in 80s or 70s they got the independence, but in 1920s they allowed the women to take part in the voting participation se allow kartile. So this is the mindset we are talking about. Let's say Odisha ranks 11th nationally as the NCB 2023 report. Odisha ranks 11th nationally in total crimes, significantly higher than the national average. And crimes kaha against hochi dekhuntu women, children, SC/ST communities and cyber crime. Comparative analysis 81 to 23 reveals a sharp rise during the previous BJD government's tenure. Overall IPC crimes, that is 1,32,713, increase in 177% since 2000. Crime against women 36,432 cases, against children that is 6th, ST atrocities that is 4th, SC 5th, cyber crime 10th, POCSO 4th. ओके, ये हूँ आपंकर जिनस. क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखो इनक्रीज हो 8214 cases 2000 and 23 रे 36,432 cases, increase in the 343% jump. Odisha ranks third after UP and Maharashtra in absolute number and first in per capita crime rate. This is something very interesting. First in per capita crime rate. Dowry related cases देखो 17,529. Kidnapping women girls, this is 2,914 cases. Sexual offense that is 1195 cases. ये डेटा गुड़िक ना आपण यूज करें इंडियन सोसाइटी एवं ओडिशा रिलेटेड पार्ट रे भी यूज करें. क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन देखो 7402 cases, 6th nationally. POCSO 4th, low conviction rate that is 8.1%. Crime against SC/ST 4th, SC 5th, conviction rate below 6%. Cyber crime 1213 cases in 23 and 34 in 2010. 842 financial fraud. Odisha ranks 10th nationally cyber crime rate. Reflects expanding digital penetration but inadequate cyber policing capacity. Digital ऊपर control नहीं, but digital expansion ही चली. Chart setting rate देखिए, overall conviction rate होची मात्र 11.6. Crime against women 9.3. Crime against children 8.1. Okay, SC/ST less than 6 and dowry cruelty 9.3%. Analytical insights देखिबा, rising crime versus low conviction ये गोटे बड़ा प्रॉब्लम. कारण लॉ एनफोर्समेंट जस्टिस गैप हमको देखा मिलूँ. जदि यहाँ को आम ठीक कर कन्विक्शन रेट इज हाई, डेफिनेटली क्राइम रेट भी कम हम. कारण लैक ऑफ एविडेंस और समथिंग से एस्केप हो जाऊे. पर कैपिटा क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट द टॉप रिफ्लेक्ट्स डीप रूटेड जेंडर वल्नरेबिलिटी.
तो पर कैपिटा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रे हाईएस्ट रे अछि। डिजिटाइजेशन विदाउट adequate cyber security infrastructure, atrocities against the ACST, persistent low conviction rates can erode the public trust in the justice and police system. MCQs देखिए, which of the following factors have been cited as the reasons for recent API outflows from the Indian stock market? Uncertainty in tariff, high corporate earning in India, इटा को हटे दियंतु, high stock valuation, rupee depreciation. 1, 3, 4 आपण कहि परिबे। Road accident, two-wheelers riders accident for nearly 46%, speeding, careless driving together responsible for more than 80%. Highest number of accidents were reported between the 12 midnight to 3 AM. कौन होगा इटा आंसर? आंसर कौन हो बेटा? 1 and 2. ओके, 1 and 2 ही हम आपंकर। नेक्स्ट देखिए, with reference to farmer and agricultural workers suicide, Maharashtra accounted for the highest share of farmer suicide, and more agricultural workers died by suicide than farmers and cultivators. And suicides in farm sector constitute less than 5% total suicides in the country. कौन हो? 1 and 3 होगा आंसर, आई गेस 1 and 3, सेकेंड भूल होगा। Which of the following crime heads the accounted for the majority of crimes against children 2023? दुई हजार तेईस रे सबुठु अधिक कोटा देखिबा को मिलुछि। Kidnapping and abduction, yes. India received 8% more rainfall than normal during monsoon season. Eastern northeastern India recorded rainfall above their long period average, lowest. Rainfall in northwest India was highest since 2001. Again 1 and 3 B. बाकी ये दुईटा हूँ आपंकर मेन्स क्वेश्चन आंसर करेंगे लिखिए एटा। जो मैंने फाउंडेशन कोड जॉइन करना दशहरा धमाका सेल चली कोड यूज करेंगे JN लाइफ एंड गोल्ड प्लाटिनम रे मैक्सिमम डिस्काउंट आप पाइपर सेल एंडिंग इन द 3rd October। ओके, PDF पाई टेलीग्राम जॉइन करें। ओके, थैंक यू।